So we have, in a way, discussed what all cases are possible with quarter wave plates and half wave plate. So today we will try to do some question solving so that, you know, हमें समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह के आता है और क्या क्या चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए अच्छे से. ठीक है, सो आज बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं. So all of these are previous questions from JAM. So this is a question from JAM 2005. Okay, question 1. So try to read the question and see if you can attempt. So there is a beam of light of wavelength lambda, which is incident on a system of a polarizer and an analyzer. Okay. The analyzer is rotated at 45 degrees to the polarizer. Now another optical component is introduced between them so that the output intensity becomes 0. So you have to tell that out of the options, what optical element can you introduce so that the intensity becomes 0. So सबसे पहले तो draw a diagram, make a polarizer, make an analyzer. Analyzer का pass axis 45 degree पे बनाओ polarizer के, and then think कि how to approach this question. ठीक है, पहले तो ऑप्शन ही देख लेते हैं. ऑप्शन में लिखा है अ फुल वेव प्लेट. सो फुल वेव प्लेट तो कुछ भी नहीं करती है, राइट? वी नो फुल वेव प्लेट से वी कैन नॉट do any kind of changes in the polarization. So this is anyway not the answer. Then option B is a half wave plate, C is a quarter wave plate, and D is an ordinary glass plate. So glass plate bhi kuch nahi karegi. So all you have to think about is a half wave plate and a quarter wave plate. Okay. So now okay, I have one answer. Let me check. Dhruv, your answer is correct. Naman, your answer is not correct. Okay. So see, how do we have to think about the problems? So just we discussed in the last class, always remember that the half wave plate will do some kind of a rotation, or it will change the handedness of a circular or elliptically polarized light, but it will not change the nature of the light. Circular polarization will still remain circular polarization. A plane or a P state, plane polarized light, would still remain a plane polarized light after passing through a half wave plate. So first you have to see that in the question, do you want to change the state of the polarization of the light or not? If you do not want to change the state of the polarization, then you need to use a half wave plate. But if you want to convert a light from plane to elliptical, or light from plane to circular, or circular to plane, or elliptical to plane, then you need a quarter wave plate. Okay. So in this question, we do not want to change the nature of the light, because let me do this question. Then there are a lot of questions. Dheere dheere you will understand how to attempt them, but let me try show you how to do this one. So what is told is that I have a polarizer. Let us say that this is the pass axis of my polarizer. And then what is given to me is that there is an analyzer, but the analyzer is oriented at 45 degree to the polarizer. Okay. So polarizer का axis तो ये है. तो अब जो analyzer है उसका axis कुछ ये है, that it is making a 45 degree angle with respect to the pass axis of the polarizer. Okay, so this is the input जो initial condition दिया है question में, it is this. So अब क्या होगा if I will consider any input on the polarizer? So let us consider like a normal P state. So कोई एक P state यहाँ पे fall कर रही है, तो मुझे क्या मिलेगा? After the polarizer, I will get light polarized
parallel to the pass axis of the polarizer. And after passing this through this analyzer, I will get light which is parallel to the pass axis of the analyzer. So this is the analyzer. ठीक है, सो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. सो आई नो कि अगर ये पी स्टेट था, यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट था, ठीक है, एंड तो यहाँ पे लेट अस से इनपुट स्टेट भी ऐसा ही था, ठीक है. सो इंटेंसिटी रिमेन्स आई नॉट हियर ऑल्सो, एंड हियर इट विल बिकम आई नॉट cos square 45. So this we know from Malus law. Now the question is asking you that I take some optical element and I put it over here. मैम वो I नॉट बाई 2 आएगा. नहीं, इनपुट मैंने पी स्टेट लिया है, अनपोलराइज्ड नहीं लिया है. It is already polarized parallel to input itself is polarized. If you will take input unpolarized like this, then the intensity is I naught by 2. Okay. Currently, I have chosen the input to be parallel to the pass axis. Okay. So अब क्या करना है? We have to think that what is this element? This ये हम क्या डालें so that output में I get intensity equal to 0. ठीक है, तो आउटपुट में इंटेंसिटी 0 करने के लिए व्हाट डू आई नीड दैट व्हाटएवर आउटपुट आई गेट फ्रॉम दिस ऑप्टिकल एलिमेंट, दिस इज सम ऑप्टिकल एलिमेंट, उसका जो भी पोलराइजेशन आए आफ्टर पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट शुड बी एट अ 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू माई एनालाइजर. दैट इज व्हाट वी वांट कि इसका जो आउटपुट आए शुड बी एट अ क्रॉस्ड एंगल विद द एनालाइजर ताकि आउटपुट 0 हो जाए. ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट. तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो ऑरेंज में मैंने लाइन ड्रॉ किया है विच इज द आउटपुट थ्रू द पोलराइजर, वी वांट टू जस्ट रोटेट इट बाय 45 डिग्री. We want to rotate it by 45 degrees so that the output from the optical element now becomes at 90 degree with respect to the analyzer and I get 0 intensity outside. That is all we want to do. And how do we do rotation? We do rotation by using a half wave plate. So answer for this question is B, that we need a half wave plate. What would happen if I will put a quarter wave plate? Quarter wave plate say I will end up producing some kind of elliptical light. Okay, depending on at what angle I orient the quarter wave plate. So यहाँ पे क्या होगा? What I need to do is I need to rotate my half wave plate so that कि half wave plate का जो optic axis है वो इस तरह से oriented हो इस orange light के. So basically what I want is कि मेरा जो polarizer से light आ रहा है, it is coming like this. So I want to rotate it to 45 degree. So this is what I want. It should come like this. Okay. So that means that I will have to orient my half wave plate ka optic axis like this. Because half wave plate is angle ka, if this is theta, so half wave plate is rotated by 2 theta amount. So this is the optic axis of my half wave plate. And I need 2 theta should be equal to 45 degree because I want to rotate the plane by 45 degree. Are you understanding? So then theta should be 22.5 degree. So I need to use a half wave plate with its optic axis making an angle of 22.5 degrees with respect to the pass axis of the initial polarizer so that it will rotate the initial ये जो orange में जो मेरे पास output है इसको it will rotate by 2 theta and it will give me a polarization state which is making a 90 degree angle now with respect to the analyzer, thus giving me 0 output intensity. Okay, so always when a question comes like this you have to think that do you want to change the polarization state or you just want कि P state है तो P state ही रहे, but I just want to modify its orientation. Okay, if you want to just change the orientation you need to use a half wave plate. अगर 100ness भी change करना है तो भी you need a half wave plate. But if you want to completely change the state of the polarization then you need a quarter wave plate. Okay, so this is how you should remember. So yes, Adrish, your answer was correct. And I think now Naman also knows that what mistake he was doing. Okay, so iske questions, matlab I find the questions on this
a little bit interesting because you have to think a little bit. Utna numerical nahi hai. It's about if you understand, the principle ki actually में हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है. They are like good questions to attempt and they are interesting to do, I feel. Okay, so this is question number 2. So this is from JAM 2006. So the question is saying that you have some electric field. So this is the incident electric field. So you have to, 4 options are given. So they are the possible directions of the fast axis. Fast axis kya hai? Optic axis, okay? So the possible directions of the fast axis of a quarter wave plate, which converts this wave into a circularly polarized wave. Okay, so you have to you have to basically treat it like a problem in vector calculus, that one electric field is given to you and you want to find out another vector so that उन दोनों के बीच का angle 45 degree हो, because we want to produce what? We want to produce a circularly polarized light. तो अगर मेरे पास एक quarter wave plate है यहाँ पे, ठीक है, so इस quarter wave plate का I want to find out that what should be the how should I orient the optic axis of the quarter wave plate ताकि ये जो input electric field है, ये जो field है, इसका आप कोई orientation है जो कि इससे दिया है 3i cap plus 4j. So it is at some angle, okay, some orientation of this plane. This is a p state, we can see that, right? So this is a p state oriented in the xy plane by some amount. Ye 3i plus 4j will tell you the orientation of this vector. So basically for that vector, that input field, I want to find out that how should I orient my optic axis to make sure that the output of the optic axis, so this is a p state over here that is given to me, and I want to produce a circularly polarized light. So circularly polarized light banane ke liye sabse important cheez hai that this angle theta, that is the angle between the E and the optic axis of the quarter wave plate, should be equal to 45 degrees. So that is what you have to check. So take the electric field as one vector and then take इसमें जितने भी directions दिए ना, so basically there are 2 directions are given in each option which are perpendicular to each other. ठीक है, so दोनों मतलब 45 degree angle बनाने के लिए 2 directions are there, no? You can either make it like this or like this. So these are, यहाँ पे options में जितने भी 2 directions दिया है, they are perpendicular to each other, but you have to sort of check for each option that are they making a 45 degree angle with respect to the input E field. Okay, so it's more like a question which you have to solve using your knowledge of the vector calculus. So what I'm saying is, let us take the E field. Okay, and let us find a sort of direction corresponding to this E field. So let us do this. So for the moment, you can drop this term, okay? Just deal with the vectors because this is sort of a constant in a way. So then what is mod of E? So mod of E is, sorry, I don't know, mera gale ko kya ho? So this is 9 plus 16, that is 5A. Okay, so my E field is like the normal vector pointing in the direction of the E vector, not the normal, like a direction vector, a unit vector would be 3 by 5I plus 4 by 5J. Okay, and now let us take option A. So option A में मेरे पास एक direction है 1 by root 2 7I plus J. So let us say that this is the direction of the optic axis.
So basically, you can think of it like this, that this is my optic axis, some OA vector, and then I have some n cap vector, and this angle theta should be equal to 45 degree. So I want to check कि मेरे पास जो भी options है, OA के जो भी मुझे value दिए हैं, they are satisfying this. So how can I check that? If I will do OA ka dot product with respect to this, so I will get this, and the magnitude of n is just 1 because it's a unit vector we have taken. So this will just be equal to cos of 45, right? So that is vector OA with n divided by the magnitude of OA should be equal to 1 by root 2. So this is the condition that you will check for all the options. So you will take both the directions which are given. So there are 8 directions in total, and you will calculate this and you will see ki which option actually satisfies this condition for both directions. Okay, so that is, this will be a very lengthy process now, like to check all the options. no, they are actually, see, if you will see the options, only 4 numbers are there. Only 7i plus j minus I plus 7j and 3i plus 4j and 4i minus 3j. Yehi 3 or 4, they are not different in calculations. Only a plus sign and a minus sign is changing in all of them. So it's very easy when you will do it. It looks like it's lengthy, but it's not lengthy. You can just do this calculations like this. Kuch bhi nahi hai. Let us do for the first one. So first one is 1 by root 2, 7i plus j. Okay, so if I will, it's what, is it 1 by root 2? Yes, it's 1 by root 2. So then I can calculate this. So that is just 49 plus 1, and this is 2. So 50 divided by 2 is 25. So I'll get 5. And if you will see, or for all of them, you don't have to now calculate the magnitude of OA because all of them will give you magnitude 5 only. So denominator में तो 5 ही आएगा सब में. सिर्फ ऊपर एक multiplication मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, ठीक है? So यहाँ पर 7i plus j है. So let me just do the dot product. So 1 by root 2 तो मैं बाहर ही रख लेती हूँ. Then I have OA क्या है 7 and that is 3. So 7 and 3 is 21 by 5 plus 4 by 5 divided by 5. So that is just 25 by 25 multiplied by 1 by root 2. So this is equal to 1 by root 2. So this is the condition that I want to check, okay, for all of them. So this satisfies. So only this calculation you have to do, which is very easy in a way. Okay, so like that, if I want to check, actually इसका answer ना A ही है. तो मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा आता तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर था, तो इतना करना नहीं पड़ता द वे इट हैज बीन गिवन. बट ये हम तभी कर सकते हैं अटेम्प्ट जब एटलीस्ट हमें पता हो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम. सो द सेकेंड OA का डायरेक्शन दिया है 1 by root 2 minus I plus 7. सो द सेकेंड जो OA है that is given minus I plus 7j. तो इसका भी मुझे पता है that this is equal to 5 only. So then OA with this will be equal to 1 by root 2. And this is minus. So minus 3 by 5 plus 7 को multiply करना है 4 था नहीं 4 by 5 आए से. So that is 28 by 5. And this is divided by 5. So it is again 25 by 25, which is equal to 1 by root 2. So this also satisfies. So you will see when you will calculate for the rest of the options. So इसमें क्या होगा ना, when you will calculate for the both directions, एक के लिए satisfy होगा, दूसरी direction के लिए dot product actually 0 आ जाएगा. So then जैसे second option को ही देखो, B option को देखो, and B option में look at this one. Okay, so if I will multiply 4 by 3 by 5, I will get 12 by 5.
and then I'll multiply 3 with 4 by 5. So I'll get minus this. So this is 0. So anyway, this option will not work. Like that, in sab mein ek जो है वो हमेशा 0 आ जाएगा. So that is wrong. And then the answer for the question would be A. So you can check it. ज़्यादा time नहीं लगेगा calculation में. But इस question से what is the point that you have to take home is that if इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा दैट इस तरह के क्वेश्चंस को वेक्टर के फॉर्म में भी वी कैन विजुअलाइज कि बेसिकली सर्कुलर पोलराइजेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे पहले पता होना चाहिए दैट आई नीड थीटा टू बी 45 एंड देन कोई भी ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है सो आई कैन फिगर आउट दैट हाउ शुड आई ओरिएंट माय ऑप्टिक एक्सिस सो दैट द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस मेक्स अ 45 डिग्री एंगल विद द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. So like that. But now this question can also come for a half wave plate that you want to, let us say, change the sort of, change the right-handed circular polarized to left-handed, for example. So then I know that whatever the direction of electric field is given, the orientation of the half axis should be मतलब right-handed में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, but let us say we want to change it into something else. So then we can find out कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए with respect to this, not 90 डिग्री. मतलब जितने अमाउंट से रोटेट करना है उतना एंगल होना चाहिए. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में we wanted to rotate it by 45 degree. So then the theta was 22.5. So ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं that I want to rotate it by 90 degrees. So we know that theta should be in that case 45. And again, a similar question can be formed in which directions of the vector directions of the half wave plate could be given to you. Matlab multiple variations of this question can come. So let us look at another question now. Okay, so this was actually a subjective question of many marks, but we don't have to do it subjectively now because ab to aata nahi hai subjective question, but we can sort of check our understanding कि कितना हमें समझ आया है. ठीक है, so this is JAM 2008. So the question is saying that a half wave plate and a quarter wave plate are placed between a polarizer and an analyzer. So I have a polarizer in the front and analyzer at the back. So all of these are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of unpolarized incident light. So पहले तो हम यही mention किया incident light unpolarized है. So वही draw कर लेते हैं figure में that it's an unpolarized incident light. And और क्या दिया है क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सबका पास एक्सिस अभी पैरेलल है एक दूसरे के एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या है फिर जेड डायरेक्शन में. ठीक है, बिकॉज जेड इज नाउ परपेंडिकुलर टू द, और सबका जो पास एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and the wave is propagating in z direction. So that is clear to us. Now the optic axis of the half wave plate makes an angle of 30 degree with respect to the pass axis of the polarizer P1. So अब क्या बोला है कि optic axis जो half wave plate का है that is making an angle of 30 degree with respect to the pass axis of P1. तो अगर मैं consider करूँ कि मेरा जो P1 है उसका pass axis मैं ये ले लेती हूँ that it is parallel to the x direction. So then the half wave plate is actually at an angle of 30 degree with respect to this. So it is something like this, that it's making a 30 degree angle. Okay. And the quarter wave plate is parallel to the pass axis of P1. So quarter wave plate का pass axis यही दिया है. It's parallel to P1. So this is the configuration that is given. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है determine the state of polarization for the light after passing through the half wave plate and the quarter wave plate. तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का था सब्जेक्टिव में, जिसमें यू हैड टू टेक सम एक्सप्रेशन फॉर द लाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ एज्यूम करना था, देन यू हैड टू कैलकुलेट. सो दैट्स व्हाई इट वाज लॉन्ग. बट इन नाउ अब क्वेश्चन में
हमें उतना एनालिसिस नहीं करना है. We just have to use our whatever knowledge we have to just quickly find out that what is going to be the state of polarization. ठीक है. So कोई और कलर लेते हैं. So अब unpolarized light is incident on P1, right? तो let us draw कि P1 के बाद मुझे क्या मिलेगा. I will get output light which is parallel to the pass axis of P1. ठीक है. अब उसके बाद क्या है, मेरे पास एक हाफ वेव प्लेट है. तो हमसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू हाफ वेव प्लेट. ठीक है. सो हाफ वेव प्लेट क्या करेगी, इट विल जस्ट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बाय 60 डिग्रीज. तो पहले प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब हाफ वेव प्लेट क्या करेगी, इट विल रोटेट इट लाइक दिस. It will rotate it by 60 degree. Are you understanding? If anything is not clear, then please stop me because ये सारे questions अच्छे से समझ आने चाहिए. ठीक है. So half wave plate ने क्या किया, half wave plate ने सिर्फ plane of polarization को rotate कर दिया, but light का state polarization state उसने change नहीं किया. अभी p polarized था. 2 थीटा से रोटेट करता है. हाँ. 2 theta से with respect to the original is parallel to x axis. So x के respect में it will rotate it by 2 theta. So theta is the angle which the optic axis is making with respect to the original plane of polarization. So that was 30 degree question में दिया है. So it has rotated it by 60. Okay. So अब हमसे क्या पूछा है, determine the state of polarization for the light. So हाँ, यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, पोलराइजर के बाद तो पी स्टेट मिलता है, ये तो मुझे पता ही है. यहाँ पर हाफ वेव प्लेट के बाद भी मुझे पी स्टेट ही मिल रहा है, बट नाउ इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आई विल गेट अ पी स्टेट. मैम ये हाफ वेव प्लेट की प्रॉपर्टी है कि वो 2 थीटा घुमाता है. हाँ, कल क्लास में यही डिस्कस किया. मैं कल अटेंड नहीं कर पाया था. अच्छा, तो कल का लेक्चर जब अटेंड करोगे तो वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल. तो हाफ वेव प्लेट बेसिकली यही करता है कि अगर मेरे पास में कोई ये स्टेट है पोलराइजेशन का, एंड आई टेक दैट द हाफ वेव प्लेट इज ओरिएंटेड, उसका ऑप्टिक एक्सिस ये है, दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस एंड दिस इज द इनपुट पी स्टेट. सो व्हाट इट विल डू इट, whatever angle the p state is making with respect to the optic axis, the half wave plate is rotated plane of polarization by 2 theta, so that you will get something like this. This is now 2 theta, this whole thing. So this rotation happens about the optic axis, not the other angle. So you don't have to take ये वाला angle, हमें नहीं लेना है. ठीक है. We have to take the angle it is making with respect to the optic axis and not any other axis. You can, बच्चे एक और चीज करते हैं that they take this axis. So जो optic axis होती है उसको fast axis भी बोलते हैं, and any axis which is perpendicular to the optic axis is also called a slow axis. So काफी बार बच्चे ये angle ले लेते हैं and they rotate it by this much amount. That is also wrong. So ये सब last class में discuss हुआ था. So if something is not clear, then last class से समझ आ जाएगा. ठीक है. So यहाँ और मैम एक पे बार क्वार्टर वेव का भी संक्षिप्त में बता दीजिए. क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है, लेट मी गो बैक. ब्रीफ में बता दीजिए, मतलब पूरा. हाँ, ब्रीफ में ही बता रही हूँ, मेरे को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा अदरवाइज, इसलिए. तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है कि अगर मेरा जो इंसिडेंट लाइट है वो इस फिगर में ग्रीन में मैंने शो किया है. ठीक है. सो दैट इज सम इंसिडेंट बीम एंड ऑप्टिक एक्सिस मैंने ये ब्लैक एरो से OA लिखा है. ठीक है. सो दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस. सो सम इंसिडेंट लाइट इज फॉलिंग on the quarter wave plate in such a manner that the angle it is making with respect to optic axis is some theta. ठीक है. तो अब दो केसेस हो सकते हैं. अगर थीटा 45 डिग्री है तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. एंड इफ द थीटा इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू,
if the theta is not equal to 45 degree, it will produce elliptically polarized light. ठीक है, so ये correct कर लेना, पता नहीं मैंने कैसे is equal to लिख दिया दोनों में. This is not equal to 45, so you will get elliptically polarized light. ठीक है, this is one case that how you can go from P state to circular or elliptical light. तो एक quarter wave plate से I can change the state of the polarization. So ये last class में discuss किया था. But second case हो सकता है कि इंसिडेंट लाइट क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर ही मैं सर्कुलर पोलराइज लाइट इंसिडेंट करूँ, इंसिडेंट लाइट को ही मैं चेंज कर दूँ. सो इन दैट केस क्या होगा कि सर्कुलर पोलराइज लाइट को इट विल कन्वर्ट बैक इनटू पी स्टेट. सो फिर क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगी, जो इनपुट लाइट के जो दो फील्ड हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो रेज में डिस्टिंग्विश करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे. सो क्वार्टर वेव प्लेट उन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस ऐड कर देती है. उसकी वजह से क्या होता है कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वी कैन कन्वर्ट इनटू सर्कुलर और elliptical, but if we have a circularly polarized light, we can also go back to P state because we can get rid of that pi by 2 phase difference. क्योंकि पहले एक पाई बाई 2 फेज डिफरेंस था, इसलिए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट आई. अब एक और पाई बाई 2 फेज डिफरेंस क्वार्टर वेव प्लेट ने ऐड कर दिया, तो टोटल फेज डिफरेंस या तो 0 हो जाएगा या पाई हो जाएगा. तो पहला पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 विल मेक अ पाई फेज डिफरेंस, और pi by 2 minus pi by 2 will make a 0 phase difference and you will come back to the P state. Okay, so this is और what मैम quarter wave plate does. अगर अगर अनपोलराइज्ड लाइट हिट करे तो कुछ भी नहीं होगा इस तरह का. तो सीधा पास हो जाएगा बस. हाँ, लाइट पास हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी फिर. नहीं, लाइट तो पास हो जाएगी. जो क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट है, दे डू नॉट चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. आई बाई रूट 2 भी नहीं करेंगे. नहीं, आइडियल रिटार्डर जो होता है, सी रिटार्डर का काम है कि कुछ फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना. ठीक है, अगर मेरे पास इनपुट में कंप्लीटली अनपोलराइज लाइट है, तो क्या ऑलरेडी देर आर सो मेनी components which are out of, which are oscillating in different planes. So I can always write an unpolarized light also as, 2 components में मैं उसको लिख सकती हूँ. But I will just add a pi by 2 phase difference between the 2 components, but the light would still remain unpolarized. I've just added another factor of pi by 2 into the already arbitrary light. ठीक है, उसका already कोई polarization नहीं था कि मैं उसको कुछ change कर रही हूँ. And an ideal retarder would not reduce the intensity. So there would be no loss of intensity. Okay. ठीक है, सो यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, सो हाफ वेव प्लेट के बाद क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में, आई विल गेट द पी स्टेट विच हैज बीन रोटेटेड बाय 60 डिग्री, ये दिस रोटेशन इज अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस. ठीक है, सो ये याद रखना है that this rotation is about the optic axis. एंड जहाँ पर 30 जो ऑप्टिक एक्सिस के साथ एंगल बना रहे थे, दैट वाज 30 डिग्री. सो थीटा वाज 30 डिग्री, सो रोटेशन इज बाय 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो अब क्या हुआ, दिस लाइट, अब ये लाइट अभी भी पी स्टेट ही रही. ठीक है, सो क्वेश्चन में अगर मेरे पास ऑप्शंस आता है कि क्या मिलेगा मुझे, तो हाफ वेव प्लेट के बाद मुझे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी. व्हाट इज पी स्टेट? पी स्टेट इज अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके, up next is what will be the state of polarization after it passes through the quarter wave plate. तो quarter wave plate पे अब क्या fall हो रहा है, quarter wave plate पे अब this thing is falling. और quarter wave plate का pass axis क्या है, orange में मैंने draw किया है. the pass axis, this is the optic axis of half wave plate and this is the optic axis of quarter wave plate. Okay, so अब क्या हो रहा है, what is this theta? This theta is 60 degree. ठीक है, so quarter wave plate क्या करेगी, will add another phase difference of pi by 2, but because ये theta 45 नहीं है, this is some 60, so what will I get? I will get some elliptically polarized light over here. So now the quarter wave plate will change the nature of the polarization, and after the quarter wave plate के बाद I will get elliptically
polarized light. ठीक है. अब that was the first question. ठीक है. Now the second question is that what should be the orientation of the pass axis of P2 with respect to that of P1 such that the intensity of the light emerging from P2 is maximum. So ये तो मतलब सब्जेक्टिवली सॉल्व करना था, बट अगर हम इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोचने की कोशिश करें, सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि मैं P2 का जो पास एक्सिस है उसको कैसे चूज करूं ताकि मुझे आउटपुट में मैक्सिमम लाइट मिले. तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, यस, 60 डिग्री ना. no, the input to P2 is actually an elliptically polarized light. मैम फिर ओरिएंटेशन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में फर्क क्यों नहीं पड़ता है? इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, it traces out an ellipse, right? ये ellipse अजीब सा ही बन गया. So it traces out an ellipse. So axis दोबारा बनाते हैं. So I have, this is some x, this is some y, and this is some ellipse. So ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा elliptically polarized light में होगा वो कुछ ये है. So it's going to move about in this ellipse. So when would be the magnitude of this electric field maximum? It would be maximum when it is pointing along the major axis of the ellipse. Okay, got it. Right? So यहाँ पर जो input है analyzer का, so P2 is an analyzer. So I have to keep on changing the axis of P2 जब तक कि वो इस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का जो मेजर एक्सिस है उसके पैरेलल ना हो जाए. और मुझे मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम मुझे मिलेगा when I'm pointing in the minor axis. So when the electric field is pointing in the minor axis of the ellipse, तब उसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा. ठीक है. सो ये क्वेश्चन, इसमें तो you had to tell the vectorial directions. You can try doing that also. If you have time, you can try to subjectively solve this question. But I am just discussing it objectively, जिस तरह का question आ सकता है एग्जाम में. ठीक है. So अब यहाँ पर हमें क्या आंसर करना है? We have to keep in mind. So point number B के लिए we will write that the axis, the pass axis, I will get maximum intensity from P2 when the pass axis of P2 is parallel to the major axis of the incident elliptically polarized light. Okay, so this is elliptically polarized light. So this is one thing, and similarly we can make a note that vice versa or something you can write that the minimum intensity when P2 oriented along the minor axis of EPL. Okay, so remember this figure. So ये जो E है, this will correspond to the minimum value and this will correspond to the maximum value. If you look at just the length of the vector. Yes. मैम ऊपर का डायग्राम पे जाओ. हाँ मैम, इधर क्वार्टर वेव प्लेट से अपना ईपीएल निकल रहा है तो उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ईपीएल का डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर कैसे रहेगा. EPL कैसे मूव करेगा? यस मैम. Circularly polarized light कैसे इमेजिन करते हैं? We think that this is my electric field, right? So ये जो electric field है
देखो सर्कुलर में हम क्या करते हैं, हमेशा जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सो व्हेन वी मेक अ सर्कल, so we take that this is my electric field and इसका पॉइंट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल ट्रेस आउट दिस सर्कल लाइक द वेव विल मूव फॉरवर्ड. तो जब वेव आगे जाएगी एट अ पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, इट विल नॉट बी पॉइंटिंग एवरीवेयर इन द सर्कल, राइट. बट जैसे कि वेव जेड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जैसे वेव मूव कर रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल रोटेट like this and it will rotate in a circle. That is what we mean by a circularly polarized light. So similarly, in an elliptically polarized light, circular के लिए क्या होना चाहिए, theta 45 होना चाहिए and the magnitude of the x and y component should be same. Only then I'll get a circularly polarized light. But अगर magnitude of x component and y component is not same and the angle theta is not 45, then what will I get? I will get an ellipse. ठीक है, जैसे Lissajous figures बनाया था, तो we get an ellipse. So अब क्या होगा, elliptically polarized light में भी at a moment the electric field is just a vector. At a moment, if you'll just take a snapshot, you will just get electric field like a vector. But as the wave is moving in Z, so as it's going forward, this will now trace an ellipse. And because it will trace an ellipse, इसका जो size है, vector का जो size है, अब वो पहले बड़ा है, फिर थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, फिर when it is oriented parallel to the minor axis, सबसे छोटा हुआ, फिर उसने साइज बड़ा करना शुरू किया, फिर वो सबसे बड़ा हुआ when it is oriented again parallel to the major axis, और फिर से it started decreasing. Okay, but that doesn't happen in a circularly polarized light because the length of this vector in circularly polarized light is same because it's tracing a circle, so the radius of the circle is same. So circularly polarized light में it will depend, irrespective of how do you place your analyzer, you will always get same intensity in some way. But elliptical में that will not happen, you will have some maxima and minima. So अब problem क्या होती है, when we think of an elliptically polarized light, we think an ellipse is moving in space. No, what is moving is an electric field, but the orientation of the electric field is changing as we are moving forward. तो हम चल रहे हैं z direction में, but this electric field is not constant, the orientation is not constant. Just a plain polarized light पे, if the electric field is oriented like this, it will always oscillate like this and the wave will move forward. Okay, but in a circular or elliptically polarized light, ये एक जो direction है वो change होती रहेगी जैसे wave आगे जाएगी, and this direction is actually going to trace either a circle or an ellipse. And if it traces an ellipse, then the length of the electric field would also change at different time in space, at different position in space, and at different time. And for a circular, the length would not change. अब दिक्कत क्या होती है? Because at an instant, it is not making an ellipse. So you cannot, visualize an ellipse. But क्या होने वाला है, जो भी मेरा कैमरा है या whatever system I'm using, वो instantaneously pictures नहीं लेता है. Okay, that we do not have that capability that we can take pictures of light at the frequency of light. It's extremely high. So what we do is we always take pictures or we always record values which are time averaged. तो जब हम एक time averaged quantity कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो लेट अस से कि मैंने इतने सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में मैंने डेटा रिकॉर्ड किया एंड उस डेटा को मैं एनालाइज कर रही हूँ, तो उस बिकॉज लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा है, तो उस मिली सेकेंड में ये बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये इलिप्स का रोटेशन कर लिया है. तो फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ द एनालाइजर मुझे डेटा हमेशा मिलेगा. इट्स नॉट दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में था तो आई एम गेटिंग द डेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज going through the whole ellipse, but because the quantities that I am measuring are time averaged quantities, so over that long duration, it is even a millisecond is a long duration for light, right? Because frequency of light is so high कि मतलब कितनी बार
maybe thousands or even more than that, 10,000, 1 lakh times the light would have almost done this rotation. इतनी बार वो ellipse में move कर ली होगी उतने time में. So I will get some intensity and I'll get maximum intensity because each time जब मैंने sample लिया, each time when the light passed parallel to the pass axis of the analyzer, the magnitude was higher. But अगर pass axis को मैं minor axis के parallel रखूंगी तो every time when the light passed through it, the magnitude was smaller. So the time average magnitude would also come out to be smaller. So this is something which I have seen with most of the students. They find it difficult to visualize because it's not an ellipse which is going. Every time it is just a vector, but the vector ka orientation is not fixed. The orientation of the vector is changing. So that orientation because the vector is changing its orientation, but how is the orientation changing? There is a relationship. So this vector is basically tracing out an ellipse as it's moving. So I hope कुछ समझ आया होगा. तो क्या कर रहे थे हम? ठीक है, so अब हम next question करते हैं. Okay, so this is 2010. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. This is JAM 2010. इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं. तो क्वेश्चन पढ़ के कोशिश करिए. क्या लिखा है क्वेश्चन में कि we have a quarter wave plate which is placed between a polarizer and a photo detector. So मेरे पास कोई कैमरा है जो कि ये कोई कैमरा है फोटो डिटेक्टर और एक क्वार्टर वेव प्लेट को बीच में रख दिया है. So when the optic axis of the quarter wave plate is kept initially parallel to the pass axis of the polarizer. So पहले जो optic axis है quarter wave plate का, it is parallel to the pass axis of the polarizer and perpendicular to the direction of light propagation. Okay, so the intensity of the light passing through the quarter wave plate is I naught. Now, if the quarter wave plate is now rotated by 45 degrees about an axis parallel to the light propagation, so what would be the intensity of the emergent light measured by the photodetector? Okay, so just try this question. Ma'am, check the answer, please. Just a मैम कुछ इनिशियली बताया नहीं है कि अनपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है. इनिशियली क्या नहीं बताया क्वेश्चन में. नहीं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है ना. हमें ये बोला है कि आई नॉट मिल रहा है जब पोलराइड और क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर तो पोलराइज लाइट ही फॉल कर रही है. ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट के बाद हमें क्या मिल रहा है? आई नॉट मिल रहा है. तो अब हमें बताना है कि अगर मैं क्वार्टर वेव प्लेट को रोटेट कर दूं तो आई नॉट के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा. It does, in this question it doesn't matter कि input क्या है because I have a polarizer. So अगर input unpolarized या polarized कुछ भी है, you can assume कि यहाँ पे कोई intensity I था, but after passing through the quarter wave plate, this is I naught. मैम चेक कर लो. हाँ, just a second. किसने आंसर दिया है अभी? Dhruva, your answer is correct. Adrish, your answer is correct. Hassan, your answer is not correct. Sanchit, your answer is correct. Naman, your answer is not correct.
Maybe a couple of more minutes, then we'll solve this. ठीक है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. सो द क्वेश्चन इज, स्टार्टिंग में क्या है, हमें बोला कि पोलराइजर और क्वार्टर वेव प्लेट जो है दोनों के दोनों का पास एक्सिस पैरेलल है. ठीक है, तो क्या होता है जब पास एक्सिस पैरेलल होता है, ऑप्टिक एक्सिस, यहाँ लेट मी ड्रॉ. सो पोलराइजर का पास एक्सिस ये जो ड्रॉ किया है वही मैं एज्यूम कर रही हूँ, जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है. सो दैट मीन्स I should get a light which is polarized parallel to this. ठीक है, so now this is incident on the quarter wave plate. So quarter wave plate का optic axis भी ये है. This is the optic axis. So if the incident light is polarized parallel to the optic axis, तो quarter wave plate कोई भी phase difference introduce नहीं करती है, क्योंकि कोई E ray O ray बनते नहीं है, दो waves नहीं बनते हैं, तो this just passes through, right? So in that case, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आउटपुट में क्या मिल रहा है. आई एम डूइंग दिस बिकॉज सो दैट काफी बार रिवाइज हो जाए. ठीक है, सो इन द फर्स्ट केस when the quarter wave plate is not rotated, this is what I am getting, and the intensity is I naught. That is what the question is saying. अब question क्या बोल रहा है कि we have rotated the wave plate about an axis parallel to the light propagation. So light propagation is in this direction. Let us say this is my Z direction. So now I'm rotating the pass axis like this, so that now this angle is equal to 45. This is what the question is telling me. So that means this angle is also 45. So अब ये करने के बाद में क्या हो जाएगा, अब मैंने 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया ऑप्टिक एक्सिस को. दिस इज द न्यू ऑप्टिक एक्सिस. सो अब क्या होगा, आई विल नॉट गेट अ, पहले क्या मिल रहा था, आई वाज गेटिंग अ पी स्टेट, बट नाउ व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट when the quarter wave plate is rotated. But why should there be any change in the intensity? Intensity तो वही रहनी चाहिए. I've only changed the distribution of the energy which was oscillating in this state into two parts, in which now the two parts are oscillating, at a 90-degree angle with respect to each other, so that the electric field is now circularly polarized. So इस question को बहुत ज़्यादा दिमाग मारना ही नहीं था. इसका आंसर D था, that intensity will not change in any way. I just told that quarter wave plate जो है, यहाँ पर you don't have to apply Malus law. ठीक है, quarter wave plate and a half wave plate के लिए कोई Malus law नहीं है. Malus law is only for a polarizer or an analyzer. A quarter wave plate and a half wave plate will not reduce any intensity, and there is no other element after the quarter wave plate. पिछले वाले question में there was an analyzer after the quarter wave plate. Okay, so that was reducing the intensity, but in this case there is nothing else. I have just redistributed the energy which was oscillating like this into now a circularly polarized light. That's all the quarter wave plate has done. Okay, so इसमें intensity change नहीं होगा. I will just get I naught. So this was मतलब it was just like अगर हमें concept आता है तो we can solve the question. इसमें बहुत कुछ calculation नहीं करना था. Next करते हैं. No, this is the same one. Sorry.
एक्चुअली ना मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ताकि when you are remembering quarter wave plate or half wave plate do not change the intensity of light. ठीक है, इसके लिए कोई मैलिस लॉ हमें अप्लाई नहीं करना है. मैलिस लॉ इज ओनली फॉर polarizers. So this was question number 4. So this is question number 5. So this came in JAM 2017. So यहाँ पे the question is saying that unpolarized light. So पहला तो मैंने वही notice करना है. Input light मुझे दिया है. Unpolarized light is incident on a combination of a polarizer, a lambda by 2 plate and a lambda by 4 plate. So lambda by 2 plate का क्या मतलब है? It's a half wave plate. Lambda by 4 plate का मतलब क्या है? It's a quarter wave plate. कल मैंने बताया था कि अगर मैं एक proper wave को देखूं, so this is lambda, which correspond to a phase change of 2 pi, which was a full wave plate. And this is actually equal to lambda by 2, which correspond to a phase change of pi, which is a half wave plate. And this corresponds to lambda by 4, which is for a phase change of pi by 2, which corresponds to a quarter wave plate. Okay, so यहाँ पर lambda by 2 means that I have a half wave plate, and this is a quarter wave plate, are kept one after another. What will be the output polarization for the following configurations? So यहाँ पर 3 तरह से configuration change किया है. So try changing that and tell the answer. So many people have answered. Let me check the option number. So मेरा आंसर क्या है इसमें? Question. Okay, so my answer is different actually from everybody. It seems like Adrish, your answer is not correct. Dhruv, your answer is correct. Sanchit, your answer is correct. Hassan, your answer is not correct. Naman, your answer is correct. Okay. So 3 people have answered correctly. 2 have answered wrong. So just see if you can figure out what you have done wrong. Mansi, your answer is not correct. Okay, so let us try to do this. So I have a polarizer and a half wave plate and a quarter wave plate. So पहले एक polarizer draw कर रही हूँ. फिर I have a half wave plate and I have a quarter wave plate. So configuration A मुझे बोल रहा है, configuration 1 is saying that the axis of the polarizer, the lambda by 2 plate and lambda by 4 plate are all parallel to each other. So this is my polarizer. This is my lambda by 2 plate. This is my half wave plate. This is my quarter wave plate. And ये जो black में मैंने draw किया है, these are the orientations of the, this is optic axis, this is optic axis, and this is the pass axis. So this is the configuration number 1. So this is configuration 1. So the axes are all parallel to each other. अब input में क्या है? Input में I have an unpolarized light. So after passing through the polarizer, I will get light polarized parallel to the pass axis. फिर half wave plate का optic axis के parallel है input.
तो कोई भी बायरफ्रिंजेंस नहीं होगा, कोई भी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंड आई विल गेट समथिंग एग्जैक्टली सेम जैसे इनपुट था. फिर अगेन आई हैव अ क्वार्टर वेव प्लेट, बट जो लाइट है अगेन इट इज पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, so there would be no double refraction, and I'll get something like this. So I will get linear polarization on the output. ठीक है, so first तो पता चल गया कि these options are wrong. Configuration 1 से ही पता चल गया कि इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा. फिर let us do configuration number 2. So उसमें बोल रहे हैं that the lambda by 2 plate is rotated by 45 degree with respect to the configuration number 1. So lambda by 2 को rotate कर दिया, lambda by 2. So फिर से मेरा ये polarizer है और ये मेरी हाफ वेव प्लेट है. इसको मैंने रोटेट कर दिया कितना से 45 डिग्री. सो इसको मैंने रोटेट कर दिया. नाउ दिस इज 45 डिग्री, and now this is the optic axis of my half wave plate, and this is my polarizer, and the quarter wave plate जो है वो पहले जैसा ही है, उसको मैंने चेंज नहीं किया. तो quarter wave plate का this is the optic axis. So again I have an unpolarized light which is incident. So polarizer तो same ही है, तो I'll get something like this. Half wave plate क्या करेगी? Basically this is what is incident right now. So half wave plate will rotate the polarization by 2 theta. Theta is 45 degree. So half wave plate will give me light like this. It will rotate the light by 90 degree, and this is what I'll get. Now this is incident on the quarter wave plate. तो अब quarter wave plate का optic axis के perpendicular भी incident हुआ है, तो भी I cannot decompose this electric field into 2 components. This will also directly, इसमें भी कोई double refraction नहीं होगा. It will also just pass through, and I will get a light now polarized like this. So I will again get linear polarization. ठीक है. Fair configuration number 3 is saying that the lambda by 4 plate is rotated by 45 degree with respect to configuration number 1. So configuration 3 बोल रहा है that I have the polarizer, then I have the half wave plate. They are same जैसे पहले में था. So this is polarizer, this is half wave plate. But अब जो मेरा quarter wave plate है उसको मैंने rotate कर दिया है by 45. So this is now 45, and this is my quarter wave plate. So अब फिर से जो incident light है, it is some unpolarized light which is incident. Then I will get light polarized like this. So optic axis ये है, so I'll have no parallel to the optic axis, so I will have no double refraction, and the light passes like this. So अब quarter wave plate पर जो light है वो ऐसे incident हुआ है. So it's making an angle of 45 with respect to the optic axis. So this is the optic axis, the rotated axis. So on the output, I would get a circularly polarized light. Okay, so these were the options. So answer was A. Okay, so this was also wrong. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसानी क्वेश्चंस होते हैं अगर हमें याद रहे प्रॉपर्ली. So 2017 में actually 2 questions आके रखे हैं. So draw. This is question कौन सा चल रहा है? Question 6. So this is also JAM 2017. So this is saying that an unpolarized light of intensity I0 passes through a polarizer P1. तो कोई एक polarizer है, unpolarized light उससे pass हो रही है. The light coming out of the polarizer falls onto a quarter wave plate with its optical axis at 45 degree with respect to the polarization axis of P1, and then passes through another polarizer P2 with its polarization axis perpendicular to that of P1.
So you have to find out the intensity of the light coming from P2 is I. So you have to find out the ratio. So पहले तो इसके लिए diagram बना लो. क्या-क्या polarizers और क्या-क्या बोल रहा है. So पहले तो कोई polarizer P1 है जिसके ऊपर कोई unpolarized light fall हो रही है. I have one answer. Let me check. So ratio निकालना है I0 by I का. Hassan, your answer is ulta. You are taking ratio of I by I0, okay? Otherwise, it's correct. Naman, your answer is correct. Sanchit, your answer is not correct. You have missed the factor of 2, जो unpolarized light का करना होता है. मैम अभी Now it's correct, Hassan. Dhruva, you have also missed a factor of 2 because incident light is unpolarized light. Mansi, you are also taking I by I0, okay? You are taking the inverse of the, you are not taking I0 by I, you are taking I by I0. That's why your answer coming in. Ma'am, when circularly polarized light passes through a polarizer or analyzer, ma'am, its intensity decreases by half. Yes. Okay. सर्कुलरली Because पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कम, वो थोड़े कम होगी ना. एक अगर एनालाइजर लगाया है और एनालाइजर जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट वुड बिहेव लाइक अ अनपोलराइज्ड लाइट. ओके ठीक है, फिर तो आंसर समझ गया मैं. ये हमने डिस्कस किया था 2 क्लासेस पहले जब एक वो ग्राफ था एंड यू वी हैड टू एनालाइज कि एनालाइजर से निकलने के बाद वो ग्राफ किस किस को कॉरेस्पॉन्ड करता है. तो उसमें एक फर्स्ट केस था जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट दोनों के लिए सेम ग्राफ आता है. आई हैड शोन. सो दैट वाज लाइक 2 क्लासेस बैक आई थिंक. बिकॉज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका लेंथ सेम होगा, but it can take any orientation just like an unpolarized light. So it will, after passing through an analyzer, you will get intensity reduced by half. Yes, Sanchit, now it's correct. Okay, so I'll just, वैसे तो आ गया है सब लोगों को, but I'll just solve it ताकि बाद के लिए you have something. तो क्या बोल रहा था, light coming out of the polarizer falls onto a quarter wave plate with its optic axis at 45 degree with respect to the polarization axis of P1. So अब इसके बाद I have some quarter wave plate. So this is a quarter wave plate at 45 degree. And then passes through another polarizer P2 with its polarization axis perpendicular to that of P1. So I have another polarizer. Iska pass axis ये है, making a 90 degree angle with respect to the pass axis of P1. So the intensity of the light coming out of P2 is I. So यहाँ पर मुझे output में I मिल रहा है and input में I0 था. So I want to find out the ratio of I0 by I. This is what I want to find out. Okay, that is what the question is saying. So now let us see. So unpolarized light polarizer से निकली, इस तरह का light मुझे मिला और intensity हो गया I0 by 2. फिर quarter wave plate से क्या हुआ? Quarter wave plate पे ये इस तरह का light incident हुआ, making an angle of 45 degree with respect to the optic axis. This is the optic axis. So I will get a circularly polarized light out of this, but intensity will not change. I will get I0 by 2. Now this is incident on another polarizer and it will behave like an unpolarized light. Circular polarization को भी हम 2 component में लिख सकते हैं. So we can write one component. If this is my x direction, this is y. So I can decompose the circular polarization with one component along x and one along y. So ये analyzer क्या करेगा? It will completely block
one component which is traveling along the y-axis and only let the x component pass. And therefore, यहाँ पे मुझे output में क्या मिलेगा? I will only get this kind of a light. एक component completely absorb हो गया and intensity will become I0 by 4. So therefore, ये ratio क्या हो जाएगा? This will become I0 and this is I0 by 4, which will become 4. So what this means is कि ये पूरे system में input I0 था, output I था, but I was 1/4 of the input. So इस sense में भी हम लिख सकते हैं that 25% transmission, because question can also come with this wording, and 75% drop in intensity. So question can also ask you the percentage drop in intensity or how much light was transmitted, like that. Okay. So let us do another question. We have lots of questions today. Shit. Camera. I don't know. (2018). This is question 6. So this is question 7, JAM 2018. So which one of the following arrangements of optical components can be used to distinguish between an unpolarized light and a circularly polarized light? So दो तरह के input हमें दिए हैं. One is an unpolarized light and another is a circularly polarized light. तो इसमें से कौन सा setup है जिससे I can distinguish that one is a circularly polarized and one is basically distinguish between the two, कि दोनों अलग अलग तरह के input हैं. So try to do this question. एक second, let me check my options. Yes, Adrish, your answer is correct. Very good. That was very fast. Hassan, your answer is correct. Very good. Again, very fast. मतलब कुछ समझ आ रहा है that you are able to do it. Dhruva, your answer is not correct. Sanchit, you have also made some mistake. Sanchit, now it's correct. Okay. ठीक है, तो करते हैं इसको. 4-5 लोगों ने ट्राई कर लिया है. Answer, just a second. Dhruva, your answer is correct. Very good. Okay, so पहले हम लेते हैं green color लेते हैं for unpolarized light. ठीक है, so first में क्या हो रहा है? Unpolarized light is falling onto my lambda by 2 plate का क्या मतलब है? That I have a half wave plate. तो half wave plate क्या करेगी?
एक अनपोलराइज लाइट का कुछ भी नहीं करेगी. आई विल गेट एन अनपोलराइज लाइट आउट ऑफ दिस. ठीक है, समझ आ रहा है या दोबारा डायग्राम बनाओ? सो आई विल गेट एन अनपोलराइज लाइट आउट ऑफ दिस. या बना देती हूँ. बहुत सारे लोग बाद में देखते हैं, उनको फिर समझ नहीं आता. सो ए के लिए हम चेक करते हैं. तो पहले मुझे क्या दिया है, दैट आई हैव अ हाफ वेव प्लेट एंड आई हैव एन एनालाइजर. So my input is an unpolarized light. So in unpolarized light, half wave plate पे fall होगी तो क्या होगा? I'll get an unpolarized light on the outside, on the output. और फिर एक analyzer है. तो analyzer क्या करेगा? Depending on the path axis of the analyzer. अगर मैं यही path axis choose करूँ कि path axis यही है, तो I'll get a light which is linearly polarized. So I'll get a P state. तो अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करती रहूंगी तो मैं कोई भी एंगल चूज करूं, वहां पे मुझे कोई ना कोई इंटेंसिटी तो मिलेगी ही, एंड इंटेंसिटी विल बिकम I0/2. दैट इज हाउ दिस सेटअप इज गोइंग टू बिहेव. सो नाउ लेट मी टेक अ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मैंने यहाँ पे ले लिया. सो लेट अस से कि मैं राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ले लेती हूँ इनपुट में. ठीक है, सो हाफ वेव प्लेट क्या करेगा? हाफ वेव प्लेट will change the handedness of the polarization. So half wave plate इसको circularly polarized light ही रहने देगा, but it will change the handedness and it will become LCP. Okay. If birefringence is happening, which will happen because circular polarized light will have two components. So anyway, these two components will move like an E ray and a O ray. So the handedness would get switched. So if RCP input है तो मुझे LCP मिल जाएगा. LCP input है तो मुझे RCP मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द लाइट नाउ विच इज फॉलिंग ऑन द एनालाइजर. तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, तो आई कैन चूज कि मैं कौन से x डैश y डैश चूज करती हूँ. सो एवरी टाइम आई विल चेंज द पास एक्सिस ऑफ द एनालाइजर. सो फॉर ईच पास एक्सिस ऑफ द एनालाइजर आई कैन ऑलवेज decompose the circular light into two components so that I will have some P state passing through it, and it will also behave just like a unpolarized light. So this setup में मुझे analyzer के through दोनों का behavior same ही लगेगा, that I will see a drop in intensity by half and I will not be able to distinguish between the two. ठीक है, अब second जो B है उसमें एक polarizer है, λ/2 है, and analyzer है. तो जो B है उसमें एक polarizer है, एक λ/2 यानी कि हाफ वेव प्लेट है, और एक एनालाइजर है. सो नाउ वी वांट टू चेक कि उसमें व्हाट वी विल गेट. सो यहाँ पर फिर से लेट मी टेक एन अनपोलराइज्ड लाइट इज फॉलिंग. सो पोलराइजर क्या करेगा? अगर मैं सोचूं कि दिस इज द पास एक्सिस, यही पास एक्सिस है, तो आई विल गेट बहुत बड़ा बना दिया. सो आई विल गेट अ लाइट विच इज polarized parallel to this. Now this light will fall on the half wave plate. So if the half wave plate is कुछ दिया है क्या? हवा दे, कुछ भी नहीं दिया ना. तो I can choose कि half wave plate कैसे oriented है. So let us say that I am choosing कि half wave plate भी ऐसे ही oriented है. Doesn't matter, but P state ही रहेगा. कुछ angle पे भी होगी तो it will just rotate it by that. But I am just assuming कि half wave plate is also, उसका भी ऑप्टिक एक्सिस यही है. देन इन दैट केस ये सेम लाइट एज इट इज पास हो जाएगी. देयर विल बी नो डबल रिफ्रैक्शन. अगर मैं कोई और एंगल चूज करूंगी तो दिस विल जस्ट गेट रोटेटेड, बट द नेचर ऑफ द लाइट वुड नॉट चेंज. इट वुड स्टिल रिमेन अ पी स्टेट. तो अगर पी स्टेट लाइट एनालाइजर पे जाती है तो मुझे क्या मिलता है? आई विल गेट दिस काइंड ऑफ एन इंटेंसिटी, राइट. जब एनालाइजर का पास एक्सिस पैरेलल होगा इस इनपुट पोलराइजेशन के, तब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा. एंड जब इट विल बी एट 90 डिग्री तब मुझे मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा. ठीक है, सो इट विल गो लाइक अ मैलस लॉ का जो कर्व होता है उस तरह से आई विल गो. सो यहाँ पर मुझे फिर से एनालाइजर के बाद में भी पी स्टेट ही मिलेगा आउटपुट में,
depending on the pass axis of the analyzer, I'll get, if the pass axis is also this one, then this is what I'll get on the output. So if now I consider a circularly polarized light, so I have a circularly polarized light and it is passing on the same polarizer. So polarizer kya karega? It will only let one component pass. So this is what I'll get. Now this is again going through the half wave plate. So again, I'll get the same thing. Are you understanding? Because यहीं पर ये इसी वाले portion में ये light same हो गई हैं. So they'll behave in the same manner. आगे का calculate करने का भी जरूरत नहीं है. They will behave in the same way. So so this will also give me a P state here. So I cannot distinguish between the two. And therefore this configuration will also not work. So let us look at C. C may I have a lambda by 4 plate and I have an analyzer. Sorry. So I have a lambda by 4, which is a quarter wave plate. And I have an analyzer. So now I want to check that what happens. So then I have input में unpolarized light. So कुछ भी नहीं करेगा quarter wave plate. I'll get back an unpolarized light out of this. Now this unpolarized light will pass through the analyzer. So if this is the optic axis and this is the pass axis, so I'll get a light like this. So I'll get a P state here. Now, if I consider a circularly polarized light, okay, so what will happen is circularly polarized light क्या करेगी? Lambda by 4 पे fall करेगी तो क्या बनाएगी? कुछ भी नहीं बनाएगी. Circularly polarized light lambda by 4 पे fall करके it will convert it, क्या हमने पढ़ा था ना? It will become a P state. You remember a circular? I just told कि अगर एक circularly polarized light lambda by quarter wave plate पे fall करेगी तो it is going to give rise to some P state. तो यहाँ पे मुझे P state मिलेगा depending on how the pass axis of the quarter wave plate is oriented, because quarter wave plate क्या करती है? It introduces a phase difference of pi by 2. तो circular polarization में already pi by 2 का phase difference होता है x और y component में. अब उसमें मैंने extra pi by 2 का phase difference add कर दिया. तो total phase difference will become either 0 or pi, and therefore I'll get a P state. या तो मुझे directly x component ही मिलेगा या फिर मुझे सिर्फ y component ही मिलेगा P state का. तो अब क्या हो गया है? If I notice this state, यहाँ पर ये दोनों जो हैं they are different now. एक तो P state में लाइट मुझे मिल गई और एक में मुझे अनपोलराइज्ड लाइट मिल गई. तो P state का कर्व जैसे अभी डिस्कस किया कुछ इस तरह से आएगा और अनपोलराइज्ड लाइट का कर्व इस तरह से आएगा. सो नाउ आई विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू लाइट्स. ठीक है. सो आई हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट टू कन्वर्ट, to change the state of polarization from a circular polarized to a P state. And so now I'll be able to check that what the input lights are. Okay, so ये P state analyzer के बाद भी मतलब analyzer के angle के साथ vary करेगी. And basically what is this curve I'm showing you? I'm showing you this theta of the analyzer, that I'm varying the theta of the analyzer, and this is the intensity. You remember we did a question like that. So the same curve for this is the final P state it will form, but इसके लिए क्या होगा? This is going to be the intensity, because मैं किसी भी orientation में analyzer के light को orient करूँगी analyzer को, every time मेरे पास intensity I0. If this is I0 intensity, so I'll get I0 by 2 each time. Okay, so for a curve, for an unpolarized light through the polarizer comes like this, and for a linearly polarized light through the analyzer goes like a sine curve. So now this will work. So एक last case है D, वो भी हम देख लेते हैं. Okay, so I'm spending so much time on these questions because ये आसान question है और हर एक aspect हमें समझ आना चाहिए. ठीक है, तुक्के से आंसर नहीं लगना चाहिए. So D में है I have a polarizer lambda by 4 plate and an analyzer. So D में I have a polarizer
लैम्डा बाय 4 यानी कि एक क्वार्टर वेव प्लेट है और उसके बाद आई हैव एन एनालाइजर। तो अब क्या है यहाँ पर इनपुट में आई हैव एन अनपोलराइज्ड लाइट व्हिच इज फॉलिंग ऑन टू द पोलराइजर। तो मुझे कुछ पी स्टेट में लाइट मिल गया डिपेंडिंग ऑन द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइजर। नाउ दिस इज फॉलिंग ऑन टू द क्वार्टर वेव प्लेट। तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगी पी स्टेट का, डिपेंडिंग ऑन द एंगल which it is making, the p state is making. So to make my life simpler, let me choose that this is the optic axis. So then it will just let it pass like this only. Otherwise, I can try to make circularly polarized light by 45 degree पे orient करूँ वो सब करूँ, but I don't want to do all that. तो basically what you have to check in this question is कि input first element के बाद मुझे यहाँ क्या मिल रहा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट के बाद मुझे सेम चीज मिल रही है तो आगे का मुझे एनालिसिस भी करने का जरूरत नहीं, बिकॉज आगे सेम एलिमेंट्स लगे हैं, उनका सेम ओरिएंटेशन है, तो दे विल बिहेव इन द सेम वे। तो व्हाट आई नीड टू जस्ट चेक इज कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट के बाद ही मुझे अलग कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसके बाद ही अलग नहीं मिल रहा है तो सब चीज सेम ही होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर अब सर्कुलरली पोलराइज लाइट को देखूँ तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट भी पोलराइजर से जाने के बाद यही बनाएगी। So at this place itself, they have formed the same beam. So I cannot use this setup also. Okay, so this is one small shortcut you can use. But anyway, you should have an understanding that how all the components are going to change the state of the polarization. Okay, so कितना टाइम हो गया? 10 ही मिनट है. So कितने questions हैं मेरे पास? मैम हाँ जी. मैम सीपीएल को तो पोलराइजर कुछ नहीं करता है ना मैम, लाइक इट रिमेन्स सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ओनली मैम, देन हाउ कैन यू से लाइक दे आर सेम? Why would it remain a circularly polarized light? Because I mean like it's constantly moving. So but the polarizer is only oriented in one direction. पोलराइजर तो मूव नहीं कर रहा है, पोलराइजर का पास एक्सिस फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, बट जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पास एक्सिस के पैरेलल होगा सिर्फ तभी तो पास हो रहा है, अदरवाइज इट्स ऑल गेटिंग ब्लॉक्ड, राइट? सो इट वुड चेंज the state of the polarization and it would make it into a p polarized light. So ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को एकदम से पता है. दिस इज कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत देर से यही डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो जैम 2018. कौन सा क्वेश्चन चल रहा है मैं यही भूल जाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी. ठीक है, इसको करो, बहुत आसान है, 1 सेकेंड में होना चाहिए. The plane of polarization of a plane polarized light rotates by 60 degree. After passing through a wave plate, the pass axis of the wave plate is at an angle alpha with respect to the plane of polarization of the incident light. So you have to tell what wave plate we need and what is this alpha. So it's so straightforward. And 2 marks का question आती है. So Dhruva, your answer is correct. Adrish, your answer is correct. Okay, very good. So इसके लिए क्या चाहिए हमें क्वेश्चन में क्या बड़ा दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है that light rotates by 60 degree. Rotation आ गया है. That means I need a half wave plate. Rotation happens only by using a half wave plate. So half wave plate rotates it by 2 alpha. तो हमें कितने से रोटेट करना है? वी हैव टू रोटेट इट बाय 60. सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो द आंसर इज बी. स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क क्वेश्चन, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. So this is question 9. This is JAM 2020. So consider a retarder. Retarder का मतलब है कोई ऑप्टिकल एलिमेंट जैसे कि हाफ वेव प्लेट या क्वार्टर वेव प्लेट. ठीक है, सो कंसिडर अ रिटार्डर
with refractive indices NE दिया है, N naught दिया है, which are the refractive indices for the extraordinary and ordinary axis लिखा है, ये rays होना है, but ठीक है, वो भी ठीक है, ordinary axis. The thickness of this retarder for which a left circularly polarized light of wavelength this will be converted into a right circularly polarized light. So हमें थिकनेस बताना है कि ये रिटार्डर जो हम बनाना चाहते हैं इस मटेरियल से, उसका कितना थिकनेस होना चाहिए ताकि एक LCP लाइट को मैं RCP लाइट में कन्वर्ट कर पाऊँ. तो अगर मुझे LCP को RCP में कन्वर्ट करना है तो what that means I want a half wave plate. So half wave plate मुझे बनाना है. तो half wave plate बनाने के लिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2 का पाथ डिफरेंस मुझे इंट्रोड्यूस करना है. तो पाथ डिफरेंस कैसे लिखा था, गो एंड यूज दैट फॉर्मूला. सो आंसर, तो अगर thickness of retarder is, let us say, Z, okay, so then I have Z and NE minus NO का magnitude लेना है मुझे. This should be equal to λ/2. This was the formula that we have been discussing from the last two classes. So this is the optical path difference. So just plug these values and quickly tell me what should be the value of Z. So λ/2 का तो मतलब हो गया 300 nanometers divided by NE minus N0. Straightforward. Answer is given in micrometers, so do keep that in mind when you are writing the answer. Adrish, your answer is correct. Very good. Okay, so straightforward calculation है. NE और N0 का value substitute करो और calculate करो quickly. फिर class question करते हैं. ठीक है, so इसका आंसर आएगा 33.33 micrometers. So just plug these values and check. ठीक है, class question करते हैं. This is from 2021. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. अब तो सारे क्वेश्चंस आसान ही लगने चाहिए, इतना डिस्कशन कर लिया हमने ये टॉपिक में. This is question 10 आ गया ना. So this is JAM 2021. So a linearly polarized light falls on a quarter wave plate and the emerging light is found to be elliptically polarized. Okay, एक P state quarter wave plate पे fall हो रहा है and emerging light is elliptically polarized. So angle between the fast axis of the quarter wave plate and the plane of polarization of the incident light can be. Yes, Sanchit, your answer is correct. Very good. So इसमें options को देख के ही you have to solve. कुछ अलग से solve नहीं करना है, सिर्फ options को देखो कि quarter wave plate है और the angle the quarter wave plate is making with respect to the input light वो क्या होना चाहिए ताकि elliptically polarized light मिले. ठीक है, just look at the options and answer. Mansi, very good, correct answer. Adrish, correct answer. Dhruva, correct answer, very good. So यहाँ पे option से ही मुझे पता चल रहा है कि मेरा अगर incident polarization ये है और मेरा जो optic axis है quarter wave plate का, let us say this is my quarter wave plate और उसका ये optic axis है. ठीक है, so this is some angle theta between them. So ये theta क्या होना चाहिए कि मुझे output में elliptically polarized light मिले. This is what the question is asking. So we know कि अगर ये 45 degree होगा तो क्या होगा, we will get circularly polarized light. So this is not the answer. अगर ये 90 degree होगा तो क्या होगा, हमें directly ये जो light है as it is pass हो जाएगी. There will be no double refraction क्योंकि दो rays में हम उसको लिख ही नहीं सकते. तो 90 is also not an option
And similarly, अगर 180 degree हो जाएगा, 180 degree बोलो या 0 degree बोलो, it means the same thing, right? So then also there would be no double refraction. So only when the angle is 30 degree, I can expect that the quarter wave plate will produce an elliptically polarized light. So straightforward 2-mark question. Okay, so मुझे एक और टॉपिक कराना था, बट वो स्टार्टिंग में जो मैंने टाइम वेस्ट किया है उसकी वजह से रह गया वो एक टॉपिक, अदरवाइज पोलराइजेशन हो जाता. तो सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हो गए. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस that can come in the exam from polarization, and polarization is an important topic. Do not miss it. अगर बाकी चीजें भी मिस कर रहे हो, इट्स ओके, बट पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये टॉपिक्स मिस नहीं करना है. वेव का जो हमने पढ़ा था, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, वो सारे टॉपिक्स मिस नहीं करने. और बाकी एसएचएम के टॉपिक मिस नहीं करने. बीच के बेशक से भूल जाओ, फोर्स्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर, टाइम ना मिले रिवाइज करने का, इट्स ओके, उन पे उतने सवाल नहीं आते हैं. बट ये कुछ टॉपिक्स तो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, एंड पोलराइजेशन इज वन ऑफ देम. So I would suggest that whenever you get some time, try to, revise it. Make a small sheet for you. Just you take all these optical elements, quarter wave plate, half wave plate, लिख दो उस पे, और different input lights के लिए क्या मुझे output में मिलेगा. Just write a short sheet that you can refer to whenever you want to see कि how will these affect, how do they change. एंड ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं पिछले 3-4 क्लासेस में, वो सब लिख लो कि हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट इंटेंसिटी चेंज नहीं करते हैं. हाफ वेव प्लेट जो होती है वो सिर्फ रोटेशन में यूजफुल होती है या एलसी हैंडेडनेस चेंज करने में यूज होती है. क्वार्टर वेव प्लेट में यूज करूंगी इफ आई वांट टू चेंज द पोलराइजेशन इटसेल्फ, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम सर्कुलर टू प्लेन और प्लेन टू सर्कुलर, लाइक दैट. ओके, so then these questions are very easy, and in a way they are like solving little puzzles. That's how I feel. If you know the key that okay, this ye karta hai, ye karta hai, so it's like just solving little puzzles. So I'll stop the class now. So take a small breather, because I think from 2:30 you have your doubt session or something like that. So happy Dashera. मैं बोलना ही भूल गई. So bye bye. ठीक है. Happy Dasara, man. Thank you. Bye bye.